नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू योगा विद हीना वजे एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर नेहा। आपका स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं पावर हठ योगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी क्वेश्चन है सेशन के बाद में उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा एक फॉलो अलोंग वीडियो। आप अपने मैट के ऊपर आ जाइए और हम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें बैठना है सिद्धासन में। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर मैंने उसके ऊपर रखा है, दोनों घुटने दूर रखे हैं, पीठ को सीधा रखा है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में आराम से रखा है और आंखों को बंद किया है। अब आप यहाँ वहां के सारे विचारों को बाहर छोड़ दीजिए। This is the time only for yourself. Focus on your breath. Relax. Let's chant Omkar 3 times. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Relax. Rub your palms. Cup your eyes. Open your eyes in your hands. Rub your palms on your face. Relax. वेलकम टू द सेशन एवरीवन। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, हमें हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करना है। तो आज हम वार्म अप में करेंगे सूर्य नमस्कार, इसीलिए जल्दी से अपने मैट पे उठ के खड़े हो जाइए। जिन्हें सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप सीखना है वो मेरे दूसरे वीडियो को देखकर उसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। प्लीज कम टू द बिगिनिंग ऑफ योर मैट. Feet together, palms together in Namaskar Mudra. Breathe in, both the hands up, bend back, stretch back. Breathe out, both the hands down, bend down. Breathe in, right leg back, stretch back. Breathe out, left leg back. Hold your breath, knee down, chest and chin down. Breathe in, Bhujangasana. Breathe out, lift up. Breathe in, one leg center. Breathe out, other leg center. Breathe in, both the hands up, bend back. Breathe out, namaskar. Relax. अगर आपकी बॉडी में ज्यादा स्टिफनेस है, फटीग है, अगर आपकी बॉडी ज्यादा मोबिलिटी फील नहीं कर पा रही है तो आप सूर्य नमस्कार के 2 से 3 राउंड और कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं दोनों पैरों को अभी हम स्प्रेड आउट करेंगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट विल सिट लाइक दिस। ऑलरेडी आपके इनर थाइज में आपको स्ट्रेचिंग फील होगा, उतना हमें पैर को स्प्रेड आउट करना है। नाउ ब्रीद इन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, टर्न टू योर राइट लेग। ब्रीद आउट करेंगे, बेंड ऑन योर राइट लेग। फोरहेड को अपने घुटने तक रखने की हमें कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, आपका हो सकता है यहीं पर रुक जाए, इट्स ओके। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जरूर बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा। ओके, जितना हो रहा है वहां तक जाकर आपको होल्ड करना है। यहां पर जब आप होल्ड करेंगे तभी आपने थाइज के, नीज के मसल्स को ढीला छोड़ना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in, slowly come up. अभी हम कंटिन्यूएशन में करेंगे सेम लेग। ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन,
Breathe in, up. Breathe out, down. 3, down. 2, down. 1, down. Slowly come up, hands down. Relax. Take a breath. And let's continue. Breathe in. Again, both the hands up. Turn to your left and bend down. Stretch down as much as you can. Keep holding, keep breathing for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in. In continuation, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 6, 5, 4. Come on, everyone. Do not stop. 3, 2, 1. Slowly come up, hands down. Take a breath. Now what we are going to do, we are going to bend forward. Legs position same रहेंगे. We'll bend forward. Breathe in, दोनों हाथ ऊपर. Breathe out, दोनों हाथ नीचे. Place your hands wherever you can. अगर आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रखिए और धीरे धीरे हाथों को आगे स्लाइड करने की कोशिश करिए. Or either you can directly try to place it down. Forward, go down. धीरे धीरे अपने forehead को भी नीचे ले जाने की कोशिश करिए. Stretch as much as you can and we will hold 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Breathe in, very nice. Breathe out and down. Relax. दोनों पैर सामने सीधे रख के आप रिलैक्स कर सकते हैं. Breathe in and out. Calm down. Let's continue now. Slowly we will lie down on our back. Slowly fold your legs like this and gently roll down. Now we'll continue with Supta Kapotasana. Again we'll fold both our legs like this. And lift your right leg, keep it on your left leg like this. Knee should point outside. Knee को ऐसे करके नहीं रखना है. Knee को बाहर की तरफ point करना है. और धीरे से अपने लेफ्ट पैर को उठा के ऐसे प्रेस करना है. The stretching is in your right outer hip. Press it and then slowly down. Again up. Slowly down. Again up. Slowly down. Again up. Down. 6. हर बार प्रेस करना है. Down. 5. Down. 4. Down. 3. Down. 2. Down. 1. 1 में होल्ड करके रखिए और अपने दोनों हाथों से लेफ्ट पैर को ऐसे पकड़ के और खींचने की कोशिश करिए. Try for more and hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly down, leg down, and opposite left leg. Keep it on your right thigh and let's start. Lift, press, press. Without using your hands, you have to press. Slowly down. Again up.
down, again up, down, up, down, again up, down. 6, up में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, डाउन में नहीं. 5, 4, 3, 2, 1. 1 में hold your thigh with your hands and pull it closer. Stretch and hold for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. Release both your legs and relax. Take a breath. Breathe in and out. Let's continue now. Slowly turn from one side and come on your stomach. Let's continue. Now we will go for Purna Naukasana. Both the toes pointing out, hands pointing at the center, chin on the ground. Now we'll breathe in and lift our hands and legs up. Breathe out and down. Breathe in and up. Breathe out and down. Do not bend your knees while you lift up. Again, breathe in, up. Breathe out, down. Last 3, breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down. One last, breathe in, up. Breathe out, down. And relax. Let's relax in Makarasana. Both the palms one over another. Toes pointing out, heels pointing in. Relax. Let's continue now. दोनों हाथ शोल्डर के नीचे. Lift yourself up. We'll go to Shashankasana for transition. Again, both the hands under your shoulders. Lift up and let's stand up. Chali, let's continue now. Increase distance between your legs. Both the toes pointing out, knees pointing out. Now we bend our knees, come to squatting pose. Okay, now make sure आपके पैर ऐसे पास में नहीं है, घुटने आपके हील्स को क्रॉस नहीं करेंगे. ओके, ऐसा पोजीशन आपको नहीं बनाना है. Increase distance. Your knees and your heels should be in one line. Cross your hands. Up. Cross. Up. जितना नीचे आप जा सकते हैं जाइए. Continue. Take pressure on your thighs. अपनी thighs और knee strength का use कीजिए. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Center and relax. Open your palms, close your eyes. Deep inhale and exhale. Calm down. Relax. Now slowly come to your comfortable sitting position. जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत टाइम से उन्हें ये पता है कि जितना वार्म अप इम्पॉर्टेंट है उतना ही रिलैक्सेशन भी इम्पॉर्टेंट है. Please do not miss the relaxation. It will keep you going throughout the day. So we'll sit comfortably, okay? Keep your one hand on your chest, one hand on your belly. Let's focus only on our breath. Observe your breath cooling down.
Relax. Relax. Let's join our hands and chant one Omkar with three Shantis all together. Breathe in. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, open your eyes in your hands, rub your palms on your face, on your body, your belly. Thank you so much for practicing with me. Keep practicing daily. Remember, हर रोज करने से ही आपके शरीर को फायदा होगा. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. इट इज बेटर फॉर योर हेल्थ. इसी तरह से न्यू वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ मैं. टेक केयर. बाय बाय.